Hello everyone. At first, a very good morning to all of you, and I welcome you all to this online platform of study. Dear students, today in this very first class, we will be reading about a chapter from history of your class 6. Dear children, I hope this will be a very pleasure giving experience for all of us to study from the beginning of the session through online mode. As we are passing through a very tough time, the government has made such directions for us. So however, we have to get go with the studies. So dear student, today we will be discussing about the first chapter of your history book, that is itself a bunches of questions. It asks the question like what, where, how and when. So you just think how interesting it is going to be. So let's begin without any further delay. So this is the first chapter of your history book, that is what, where, how and when. So at the beginning of the chapter we see a little girl like you, named Rashida. She is reading the newspaper and coming across, while reading the newspaper, she comes across a phrase called 100 years ago. 100 years ago. What has been said? 100 years ago. Then she wondered, she was very much surprised that how could people knew about such hoary past, such long past. कैसे लोगों को पता चलता है इतने पास्ट के बारे में. She thought to herself, and she comes across a lot of questions in her mind. Firstly she thought that we can know about the recent event by reading newspaper, listening to radios, etc. If it is the story from the last year, if it is the event from the last year, we can ask somebody who can remember. But how can people know about such hoary past, such long past? So this is the thing the chapter begins with, and now we have to know how people could knew about the past. Such past thing, how could people knew all about. लोगों को कैसे पता चलता था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. और क्या पता चलता था वो सारे हम देखेंगे कि लोगों को इतने पास्ट के बारे में वो पता तो चलता था, उसके साथ साथ उनको क्या क्या जानकारी मिलता था उसके बारे में हम लोग देखेंगे. देखो बच्चों, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. आप लास्ट तक सही ढंग से देखिए, ध्यान से, और उसको ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद बुक एक बार पढ़ लेना. And listen to me carefully whatever I am saying. Okay. So here, what ideas we collect from the past? What can we know about the past? Past का मतलब the thing that has happened in long back, or that thing happened in the bygone days. Not long back, bygone days में जो हुआ है, that's, or that may be past, that may be long past, that may be near past. So what things that we can know about the past? There are several things we can find out about the people, what they ate, the kind of clothes they wore, the houses they lived. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, and the different sections of life, different sections of people. And we can also find out about the games the children played, the stories they heard, the plays they knew, the song they sang. So we can know a good many account about the past people, a good many account of the past people. We can know many things about the past people. हम लोग बहुत कुछ जानकारियाँ ये पास्ट पीपल के बारे में जान सकते हैं.
कि वो लोग क्या थे, कौन थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, और कौन सा कैसे घर में रहते थे। ओके, और समाज में कौन कौन से तरह के लोग रहते थे। उस टाइम में भी हंटर्स थे, हॉर्डर्स थे। हंटर्स का मतलब द पीपल who depend their livelihood on hunting animals. Herders, the people who took care of the domesticated animals and live their life. So people from different sections of society, we can know from the past their livelihood, their way of living the life. Okay, so where did people live? So this is a very big question for us. Now how do people live and where did the people used to live? ना लोग कहाँ रहते थे उसके बारे में हम देखेंगे। अच्छा, रहने के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें क्या चाहिए ना, रहने के लिए हमें पहले पानी चाहिए। लोग जहाँ भी रहते थे पानी रहना बहुत इम्पोर्टेंट होता था। इसलिए फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन द मैप गिवन हियर। ए मैप इधर गिवन, द मैप हैज़ बीन गिवन हियर, द रिवर, अबाउट द रिवर नर्मदा। ये दिस इज द नर्मदा रिवर। देखो बच्चों, I am drawing here, this is Narmada and another one is Tapti. So this has been said about the Narmada river. So I can show you clearly. So people have lived along the banks of this river for several 100,000 years. People live here from the very past, since very past. बहुत दिनों से नर्मदा रिवर के पास रहते थे इंडिया में। And how they were living, why they were living? Because they were able to get plenty of water for their livelihood. They may be doing cultivation, they may be depending for many things. Water is necessary, so water रहना बहुत जरूरी है। ज़्यादातर के the civilization started, the people started living on the banks of the river, यानी कि नदी के पास रहना पहले शुरू किए। Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers. That is, people who gathered their food. Skill gatherer का मतलब, now the people were very good in collecting the food in the ancient time. Ancient time से लोगों गैदरिंग करने का चीज़ उनको बहुत अच्छे से आता था। वो गैदरिंग करके खाते थे। They did not do any cultivation at the very beginning of the civilization. सिविलाइजेशन के प्रारंभ से लोग क्या करते थे, खेती तो नहीं करते थे। They were wandering here and there, they were moving here and there and collecting their foods. So therefore they have been called as the skilled gatherers. And they knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest, collected roots, fruits and other forest produce of their food. So dear student, they were very well known. They were very well known for their skill of gathering food, and they knew the different sources how they can collect the food. So this was the very beginning of the civilization. Civilization के प्रारंभ में पहले collect करके खाते थे. Then at a point of time, this human being started thinking that they can dominate other sort of animal. तो उनको लगा धीरे धीरे कि वो लोग दूसरे एनिमल को कब्जा कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, देन दे नो लॉन्गर बिकेम द गैदरर, नाउ दे स्टार्टेड हंटिंग द एनिमल्स। नहीं, हमें अभी गैदर नहीं करना है, हमें अभी एनिमल को हंटिंग करके भी खाना है। ओके, तो उसके बाद क्या करने लगे बच्चों, ना दे स्टार्टेड हंटिंग एनिमल, नाउ दे बिकेम हंटर। द वर्ड वाज देयर, राइट, हंटर। दे स्टार्टेड हंटिंग द एनिमल्स। Okay, so this was their life. Now we can see the people now find the Suleiman and Kirthar hills to the northwest. Now I can show you Suleiman, this is Suleiman and this is Kirthar hills. So what has been said about this region? इस एरिया के बारे में क्या बताया गया है बच्चों? देखो, some of the areas where women and men first begin to grow crops as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. Now 8,000 साल पहले सुलेमान और किरथर हिल्स के पास और माउंटेन रेंज के पास क्या करने लगे लोग? They started growing the crops. So here we can find some remains of the past. पास्ट के कुछ रिमेन्स हमें
कुछ बचा हुआ चीज़ें हमें किरथर और सुलेमान हिल के पास मिलता है, जहाँ कल्टीवेशन पहले हुआ माना जाता है। ओके, कहाँ हुआ था? सुलेमान एंड किरथर। Then again, people also began rearing animals like sheep, goat, cattle, and lived in villages. Now these wanderers, now the wandering people, now the moving people, now the nomads people started settling down and lived in the villages. They domesticated many of the animals who were which were or what were moving around them. जो एनिमल्स उनके आसपास घूमते थे वही सारे को they started rearing, they started domesticating those animals for their यूज, उनके व्यवहार के लिए, उसको यूज करने के लिए, खाने के लिए हो व उनके कुछ सामान उठाने के लिए हो, बहुत सारे कामों में ये काम है। देखो बच्चों, पहले गैदरर्स थे, देन दे बिकम हंटर्स, नाउ दे बिकम हॉर्डर्स। क्या बन गए बच्चों? दे बिकम हॉर्डर्स। हॉर्डर्स का मतलब द पीपल हु कीप्स द एनिमल्स, राइट। देन ये रखने लगे। आगे फिर से एक जगह के बारे में बताया गया है, लोकेट द गारो हिल्स इन द northeast. This is the Purvanchal or Garo hills is there, okay, and the north to the northeast, and the Vindhyas in central India. नर्मदा के पास ही विंध्यस है, right, ये है विंध्यस। What has been said about these two places? इस जगह के बारे में क्या बताया गया है? देखो बच्चों, इस जगह के बारे में क्या बताया गया है ना, people agriculture developed in this area. These were the some of the other areas वेयर एग्रीकल्चर डेवलप। देखो, सुलेमान और किरथर में तो डेवलप हुआ था, लेकिन गैरो हिल्स और आपके कौन सा जगह में भी डेवलप हुआ था? आपके ना विंध्यस रेंज के पास भी डेवलप हुआ था। देन दीज प्लेसेस वेयर राइस वाज फास्ट ग्रोन, इट इज बिलीव दैट राइस वाज फास्ट ग्रोन हियर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यस, टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यस, विंध्यस के नॉर्थ के ओर ये ना इस जगह में ज़्यादातर के ना राइस ग्रोन हुआ है, ये माना जाता है। नॉट माना जाता नहीं, वी हैव सर्टन एविडेंसेस। देखो बच्चों, हिस्ट्री विदाउट एनी प्रूफ इज जस्ट लाइक ए स्टोरी फॉर अम्यूजमेंट। और हिस्ट्री का कोई अगर सबूत नहीं है तो वो स्टोरी हो जाएगा। अच्छा लग रहा है ना, बहुत पुराना चीज़ें जानने में बहुत अच्छा लग रहा है। देखो, ह्यूमन बींग पहले क्या था ना, पहले गैदरर्स था, हंटर होने लगा, उसके बाद सेटल लाइफ शुरू किया, एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, ये सारे बारे में आपको पता चल रहा है, राइट। तो उसके बाद ये तो बहुत इन द वेरी वेरी फास्ट टाइम, नाउ आफ्टर ईयर्स पास और आफ्टर द ईयर्स पास व्हाट हैपेंड ना, लोग ज़्यादातर के इसी रिवर्स के एरिया में ही रहते थे, जैसे नर्मदा में हमें प्रूफ है। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। देखो, हम देखेंगे और एक तो जगह के बारे में ना, इंडस रिवर, ये देखो बच्चों, दिस हैज बीन पास दिस वे इंडस एंड गोस और ड्रेन इनटू द बे ऑफ अरेबियन सी में ये ड्रेन हुआ है। एंड इट हैज़ ए नंबर ऑफ स्मॉल रिवर कनेक्ट टू इट, दीज आर कॉल्ड द ट्रिब्यूटरीज। क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरीज। द रिवर which joins the large river are called tributaries. The river which supplies water to the main river are called tributaries. So ये दोनों के बारे में क्या बताया गया है हम लोग के देख लेंगे कि ये ट्रिब्यूटरीज के बारे में क्यों बताया। देखो, इस एरिया में क्या हुआ था ना, about 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of this river. Some of the earliest cities, जैसे कि मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लासेस में भी है, अभी पहले से ही बता सकता हूँ, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो लाइक सिटीज वेयर फ्लोरिश यानी डेवलप ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर्स। इस बैंक ऑफ द रिवर में बड़ा बड़ा सिटी डेवलप हुआ था उसी टाइम में, बहुत सारे सिटी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रूपार, कालीबंगान, ये बहुत सारे हम आगे भी पढ़ेंगे, राइट। सो ये सारे सिटी डेवलप हुआ था। एंड लेटर अबाउट 2500 years ago cities developed on the banks of गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड along the sea coast। लेकिन बहुत बाद में क्या होने लगा,
उसका कुछ सालों, कुछ ईयर्स, कुछ सेंचुरीज के बाद ना तो ये गंगा एरिया में भी लोग रहना शुरू कर दिए. यू कैन सी द गंगा हियर, यू कैन सी द गंगा हियर एंड इट हैज़ ए नंबर ऑफ रिवर विथ इट, राइट. ये जो रिवर है इधर भी लोग रहना शुरू कर दिए, इस एरिया में भी शुरू कर दिए. पहले तो इस जगह में रहे, राइट. सुलेमान किर्थर जगह में रहते थे, विंध्या में रहते थे, उसके बाद इस जगह में भी रहने लगे, इधर रहने लगे. सो दिस इज द डिफरेंट प्लेसेस इन इंडिया वेयर वी कैन फाइंड द हैबिटेंट्स ऑफ द एंशिएंट पीपल. तो अभी इस जगह में रहने लगे. लुक एट द गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज में दिखाया आप लोग को. एंड सोन रिवर के बारे में भी मैं दिखाया. इधर यू कैन सी द सोन रिवर, इट इज़ कनेक्टिंग टू द रिवर गंगा. ये देखो, ये रिवर गंगा को कनेक्ट किया है. ये रिवर गंगा है, राइट. तो इसको ऐसे कनेक्ट किया है. ये आपके कौन सा ये सोन रिवर दिख रहा है, यस. तो इस जगह में लोग रहने लगे. देन dear children, we are moving ahead and we will see so many interesting things about the past. We can find a numerous interesting thing about the past. देखो बच्चों, history is always very fascinating and all time favorite things for the people to enrich their mind and get more knowledge. Knowledge हमें history से ही मिलता है, बहुत ज़्यादा knowledge हमें history से मिलता है. If you have love for the history, you can be a very knowledgeous person. सारे चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, फिर भी हिस्ट्री भी very important है, राइट. सो आगे देखते हैं बच्चों. इन एंशिएंट टाइम द एरिया along these rivers to the south of Ganga known as Magadha, now lying in the state of Bihar. Its rulers were very powerful and set up large kingdom. देखो बच्चों, गंगा किनारे जो बिहार है अभी का, उस जगह में एक बहुत बड़ा सा किंगडम डेवलप हुआ था. उसका नाम मगध था एंड इट वाज very पावरफुल. उसके बाद देखो, लोग सेटल होने के बाद उसके बाद किंगडम बनाने लगे. कुछ लोग राजा होने लगे, कुछ लोग लीडर बनना शुरू कर दिए, है ना. तो दिस इज हाउ द हिस्ट्री इज डेवलपिंग फ्रॉम द वेरी एंशिएंट पास्ट. धीरे लोग डेवलप होने लगे. देखो, हम लोग बंदर जैसे ही थे, यानी कि ह्यूमन बीइंग बंदर जैसे ही था. समझ में आ रहा है कि नहीं. धीरे ही इट इज़ स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलपिंग ओवर द टाइम. ओके. सो देखो, उसके बाद कुछ सालों, कुछ ईयर्स, सेंचुरीज के बाद और सम 1000 ईयर्स के बाद क्या होने लगा, गंगा के ओर मगध नाम का स्टेट बनने लगा और बहुत सारे स्टेट भी बनने लगा. ओके. अवंती, काशी, मगध, कुशल, उत्कल, राइट, कलिंग, ये सारे स्टेट बनने लगा धीरे. तो हम देखते हैं आगे. मगध now lying in the state of Bihar, its rulers were very powerful and kingdoms were set up in other parts of the country as well. जैसे कि मैं बताया, उत्कल हमारे जो उड़ीसा, भंजनगर भी है ना. भंजनगर कहाँ के है बताओ तो. भंजनगर हम लोग का जो केंद्रीय विद्यालय है, हम लोग के जो स्कूल है, हम लोग कहाँ से है, कौन सा पुराना स्टेट का है, कलिंग. दिस इज बिलोंग टू कलिंग. समझ में आ रहा है, ये कलिंग का था. और दिस इज वेरी फेमस इन द हिस्ट्री एज वेल. ओके. Then they travel from one part of the subcontinent to another part. They always travel from one part to another part, and the hills and high mountain including the Himalaya, deserts, rivers and sea made their journey at times but never impossible in their life. Dear children, you try to understand one thing. There was no communication, there was no proper road, there was very dreading animals moving here and there, but still then people from one corner moving to another corner of the world and the country. दुनिया के बहुत सारे जगह लोग घूमने लगते थे. And why it was so? Now people move for adventures also. Some people move for knowledge, some people move for their livelihood. लोग तरह के कामों में घूमते थे. ओके. तो लेकिन आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ जॉब करने के लिए घूम रहे हैं, कोई अलग काम के लिए घूम रहे हैं, लेकिन उसी टाइम का घूमना कुछ अलग था. अभी तो हम लोग बस में चले जा रहे हैं, ट्रेन में, फ्लाइट में जा रहे हैं, लेकिन एट दैट टाइम पीपल हैव टू मूव ऑन फुट, राइट. सो आगे हम लोग देखेंगे.
सो पीपल ऑलवेज बीइंग मूविंग इन द पास्ट ऑल्सो, लोग पहले से भी घूमते थे, आज भी घूमे. द हिल्स एंड द माउंटेन्स दे नेवर प्रिवेंटेड देयर पाथ. कभी ये मुश्किल ना हुआ था, बहुत मुश्किल के बाद भी घूमते थे. यू नो अबाउट द एंशिएंट पीपल दैट मेनी पीपल इन द पास्ट ऑल्सो विजिटेड इंडिया फॉर सो मेनी थिंग्स. सम पीपल केम फॉर नॉलेज, सम पीपल केम फॉर सम डिफरेंट थिंग्स, राइट. तो ये हुआ था. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट वाज हैपन, देयर वाज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ इन कम्युनिटी. हम लोग के और उन लोग के आइडियाज़, रिलीजन चेंज होता था, आइडियाज़ कम्युनिटी चेंज होता था, राइट. सो देखो बच्चों, हम देखते हैं. सो मैन एंड वीमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, ऑल्सो एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर. बाढ़ आ जाएगा तो चले जाएंगे, ड्रॉट्स होगा तो चले जाएंगे, है कि नहीं. समटाइम मैन मार्च इन आर्मीज कॉन्करिंग अदर्स लैंड. धीरे धीरे राज जो जब किंगडम बनने लगा, लोग दूसरे किंगडम को अटैक करने लगे फॉर इन ऑर्डर टू कॉन्कर देयर लैंड एंड वेल्थ. तो ये सारे चीज़ों भी होने लगा. देखो बच्चों, हम एंशिएंट मानव से क्या डेवलप हो रहा है लोगों के बारे में. बट बिसाइड मर्चेंट्स ट्रैवल विथ कैरावन्स और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. Then and religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instructions and advice on the way. देखो बच्चों, टीचर्स लोग को भी घूमना पड़ता था. मैं आपको मोबाइल में पढ़ा रहा हूँ, कंप्यूटर में पढ़ा रहा हूँ, ओके. लेकिन इन द अर्लियर टाइम the teachers have to move from one place to another place in order to deliver their knowledge, in order to give their advices, in order to give their valuable thought to the people, so that they can reform their mind, they can revolutionize their mind for better things, to for a good deed. अच्छे अच्छे काम करने के लिए लोगों को सिखाते थे. Finally some people perhaps travel driven by spirit of adventure. Whatever I told, that has been here written here, waiting to discover new and exciting places. Some people love to adventure. Adventures means to do daring deeds. भयानक काम करते थे, उनको अच्छा लगता था. नया नया डिस्कवरी ढूंढते थे, नया नया चीज़ें जगह ढूंढते थे, एक्साइटिंग प्लेसेस घूमते थे. ऑल दिस लेड टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन द पीपल. तो ये लोग इधर उधर घूमेंगे तो धीरे धीरे क्या होता था ना, आपस में जो भाव का आदान प्रदान भी होता था. सो देखो बच्चों, मैं एज आई टोल्ड यू, व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउ, यू नो द रीजन्स. पीपल आर मूविंग फॉर देयर फैमिलीज, for exciting tours, they are going for their business purpose. I am from Polangir and staying here in Bhajnagar to work in the Kendriya Vidyalaya. So this is the different reasons why I am staying here. And the way your relatives also move from one place to another place for different purpose. So let's see again. Once more hills, mountains and seas from the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted did scale the mountain and cross these frontiers, and those who wanted did scale the mountain and cross the sea also. देखो बच्चों, the people who are with infinite strength and willpower, there was nothing in their life, there is nothing in their life that can prevent their way, that can prevent their road in their life. उनके लाइफ में किसी भी रास्ता उनको रोक नहीं सकता. जो व्यक्ति के अंदर इन्फिनाइट पावर्स होता है, उसको कोई भी इन्फिनाइट विल होता है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता. जैसे कि इन द अर्लियर टाइम ऑल्सो, डिस्पाइट ऑफ दैट very very scarce situation, very very poor condition in every aspect of the life, people still then they could move from the different countries, different area, different lands they used to move. Then so these movements of people enrich our culture, traditions. People shared new ways of carving stone, composing music, and even cooking food over several hundred years. So this is how in the ancient time the things were happening, and so is happening now also. ना लोग इधर आना जाना करते थे, इस एरिया के लोग और दूसरा एरिया जाते थे. Therefore there was enriching our culture. If some other people also come from some people from the foreign land come with their nice ideas and they share with us, they exchange our ideas, they carry some ideas from us also. जैसे कि रामायण, महाभारत, गीता, ये सारे बुद्ध धर्म, ये सारे लेके
चाइना की ओर स्प्रेड हुआ है, उनके आइडियाज इधर आए, जैसे कि द आर्किटेक्चरल स्टाइल फ्रॉम द पर्शिया, जो साउथ वेस्ट एशिया से आया है, तो ये सारे चीज़ भी भारत को आया है। ग्रीक का स्कल्पचर, मूर्ति बनाने का कला, ये सारे आया है। तो ये सारे चीज़ों के ये था, दिस इज ऑल अबाउट द थिंग, दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री ना। पुराना टाइम से ह्यूमन का हिस्ट्री कैसे शुरू हुआ है उसके बारे में दिया है, एंड हाउ इट इज़ डेवलपिंग ओवर द टाइम. So dear students, then a question comes to our mind, then how can we know such things, such a good account about all those people? Now we know it through the different historical sources, different sources that help us to know about the past. जैसे कि पुराना चीज़ें हो, जैसे कि रिमेन्स ऑफ द थिंग्स दे वर यूजिंग, कॉइन्स हो, उनकी बहुत सारे इंस्क्रिप्शन हो, ये सारे चीज़ों से हमें ये लोगों के बारे में पता चलता था. एंड मैं दिखा सकता हूँ आपको कुछ. बिफोर आई एंड अप, आई मस्ट शो यू दिस इज हाउ वी नो अबाउट द पास्ट पीपल. सो दिस इज द थिंग दैट स्पीक्स ऑफ अबाउट द पास्ट पीपल. सी, दिस इज द थिंग. The historians study this kind of thing, and they tell us about the past thing, about the human history. What is history? History is the study of the past. हिस्ट्री क्या होता है बच्चों? द स्टडी ऑफ द पास्ट. लेकिन स्टडी ऑफ द पास्ट किस चीज़ का पास्ट? स्टडी ऑफ द पास्ट ऑफ ओनली ह्यूमन हिस्ट्री एंड द थिंग एसोसिएटेड विद देम. क्या होता है हिस्ट्री? ना ह्यूमन हिस्ट्री को पढ़ना और उनकी रिलेटेड जो है उसको, ह्यूमन के रिलेटेड सारी चीज़ों को ही हिस्ट्री कहा जाता है. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर, in the next class we will be discussing about the rest portion of the chapter. तो बच्चों आपको बहुत अच्छा लगा होगा, जो ज़रूर देखना ये वीडियो को, और जो डाउट है मेरे को इसके जो कमेंट है इसमें पूछना. समझ में आ रहा कि नहीं? और सारे बच्चे 2-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे, कम से कम 2-2 क्वेश्चन पूछेंगे. ओके, सो दिस इज द थिंग, एंड आई विल शेयर दिस थिंग टू YouTube, and you must watch there, and you will comment there with your name and roll number as well. Everyone will ask 2 questions. Okay, thank you. Bye for now.